Hi guys, welcome back to my channel, or welcome if you are new. In this week's video, I'm going to be showing you all how I make Biscoff Trifle. This is a perfect sweet treat to be enjoyed by everyone regardless of their age and can be served at any occasion. आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं बिस्कॉफ का ट्राइफल कैसे बनाती हूँ। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है और ये बच्चों को भी और बड़ों को भी पसंद आएगा, तो आ जाए हम शुरू करें। Be sure to subscribe so that you don't miss out on any of my new videos, and if you hit the bell icon, you'll get notifications every time I upload. For this recipe, we'll be needing half a litre of milk, 2.5 tablespoons of sugar which can be adjusted to taste, 3 tablespoons of custard powder, 1 tablespoon of butter, half a cup of cream which is equivalent to 100 milliliters, 1 tablespoon of coffee, half a cup of water, as well as 250 grams of Biscoff biscuits. इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, 2.5 बड़ी चम्मच चीनी जिसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, 3 बड़ी चम्मच कस्टर्ड का पाउडर, 1 बड़ी चम्मच बटर, आधा कप क्रीम यानी कि 100 मिलीलीटर्स, 1 बड़ी चम्मच कॉफी, आधा कप पानी और 250 grams Biscoff biscuits. First of all, whilst the stove is still off, into a pan I'm going to add in the milk, the sugar and the custard powder, and I'm going to give this a good whisk. अभी मेरा चूल्हा बंद है और मैं हंडिया के अंदर मिक्स करती हूँ दूध, चीनी और कस्टर्ड पाउडर। इसको अब ठीक तरह whisk कर लें। Now I'm going to turn the stove on medium-low heat. Don't turn it on too high, otherwise it will burn and thicken too quickly. अब मैं चूल्हे को मीडियम लो हीट पर चला लेती हूँ। हमने इसको ज़्यादा तेज़ नहीं करना है इसलिए कि फिर कस्टर्ड ज़्यादा थिक हो जाएगा और बर्न हो जाएगा। Once this is nice and thick, we can add in the butter along with the double cream. Make sure that you keep whisking the custard throughout the process. जब कस्टर्ड थिक हो जाएगा, हम इसके अंदर बटर और डबल क्रीम भी डाल देंगे। When the custard reaches the thickness of your preference, you can remove it from the heat and allow it to cool in a cool dish. जब ये ठीक तरह थिक हो जाएगा, इसको हम हीट से रिमूव कर देंगे और कूल होने देंगे। In a separate small bowl, I'm going to mix the water along with the coffee granules and mix this so it can dissolve. मैंने एक separate छोटा bowl लिया है और इसके अंदर मैं coffee granules को dissolve करूँगी पानी में। Now we are ready to start layering. First of all, I'm going to go ahead and make a layer of the Lotus Biscoff biscuits. अब हम layers बनाने के लिए तैयार हैं और सबसे पहले मैं बिस्किट के लेयर लगाऊंगी। Once the biscuit layer is ready, I'm going to go ahead and pour on a generous amount of coffee to ensure that they absorb the coffee. बिस्किट के ऊपर अब हम कॉफ़ी स्प्रेड कर देंगे, फिर कॉफ़ी ठीक तरह absorb हो जाएगी। Next up is the custard. Make sure that when you add the custard, you spread it around evenly. अब मैं ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगा रही हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने कस्टर्ड को काफ़ी थिक रखा है, लेकिन अगर आप चाहें आप इसको थिन भी रख सकते हैं। Continue this layering process until you have finished. अब इसी तरह हम लेयर्स लगाते रहेंगे। To decorate, on top of the final layer, I'm going to be sprinkling on some Biscoff crumbs. To make these crumbs, I used my chopper. However, if you do not have one, you can make them by hand.
डेकोरेट करने के लिए सबसे आखिरी लेयर के ऊपर हम बिस्कॉफ के क्रम्ब स्प्रेड कर देंगे। अब या तो इनको चॉपर में बना सकते हैं या आप हाथ से बना सकते हैं। We are now ready to refrigerate this for 1 or 2 hours or until everything is completely set. अब ये तैयार हो गया है, लेकिन इसको खाने से पहले हमने इसको 1 या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है जब तक ये ठीक तरह सेट हो जाए। Now this is beautifully set, so let's serve this. अब ये ठीक तरह सेट हो गया है तो इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। Now I'm going to very carefully try to take out a slice without ruining the rest of the trifle. अब मैं बहुत आराम से एक स्लाइस निकाल लेती हूँ कि बाकी ट्राइफल ना खराब होए। This looks absolutely delicious and I cannot wait to tuck in. ये बहुत मज़ेदार लग रहा है और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके लेयर्स भी ठीक तरह बन गए हैं, इसलिए कि हमने थिक कस्टर्ड यूज़ किया है। Here it is guys, here is the end result. This is a super quick and easy recipe which is perfect to make when you are in a rush but you still need a sweet treat. If you enjoyed this video, please do give it a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप क्या देखना चाहते हैं। Let me know in the comment section down below what you guys want to see next time. Thank you so much for watching. See you next time. Bye!